Hi, Hi. how are you doing? I'm good. How are you? Good, good. How was the Sunday? I don't know. Just ऐसे ही होता है हमेशा Sunday बहुत जल्दी निकलता है because I don't get Saturdays off. Never have I got ever in my life. तो फिर ऐसे होता है Saturdays अगर off मिले तो you spend you rest on Saturday and then do your work on Sunday. वो तो कभी हुआ ही नहीं. So I'm used to it. You bata, how was yours? You can be a little louder, I think. I'm fine with it, but if you are a little louder, then it would be. Oh, is it that? Yes. Okay. No, frame is fine. Just a little louder. I think I should connect to my, earphones. तो No, I think it is fine. I think it's fine. करके देखो एक बार. मैं करूँ? नहीं अभी चल रहा है, चलेगा, ठीक है. ठीक है. Okay. So hi guys, we have Harshita Gwalani today. We are schoolmates, school friends, and we had chatting after I think 9-10 years. 2010 we passed out, and उसके बाद हमारी अभी बात हो रही है. But I have seen her transforming. We are connected on social media, Instagram and Facebook. So I have seen her transforming. I know the old Harshita, the little fat Harshita, and now she is like completely changed. So she is Harshita Gwalani, and as I mentioned in my previous post, she is a dentist also. She has done her BDS. I think she has done her completed the masters also, and right now she is teaching in one of the colleges in Jaipur. So by looking at her personality, it's kind of like when I got to know you are teaching, so I was like, यार हर्षिता पढ़ाने वाली हर्षिता हो गई अब, ठीक है, because this is the personality generally like ऐसे पता नहीं चलता है ना जब तक बात नहीं करते हैं कि what they are doing in their professional life. लेकिन I am being following your channel on Instagram. मतलब क्या करते हो यार, मतलब yoga, you do yoga also. You are completely into fitness, like yoga. So I really don't know. What is your students' reaction when they see you like हमारी मैम पढ़ाने आ गई हैं and like so fit, because generally teachers का impression teachers को लेके कैसा होता है ना कि यार teachers, लेकिन ये हमारे आज की teacher हैं, हमारी youth connected वाली teacher. So what is your reaction like when you first went in college? कैसा experience था पढ़ाने का? I really think कि all my students hate me because I'm dead strict. Like I'm really strict. मतलब मेरे को दिखता है. I can sense it कि they're hating on me. But that works for me, क्योंकि I think I don't do it on purpose. ऐसे नहीं कि चला के मैं strict हूँ. बस I didn't really know कि मैं ऐसे होने वाली हूँ. But I am absolutely, they are terrified of me, and I don't really think कि मेरे students मुझे ज़्यादा पसंद भी करते होंगे. I think if your students are joining over here, तो वो सुनेंगे कि यार तो बहुत honest response दे दिया हर्षिता मैम ने. Actually, मतलब पता नहीं क्या होता है, it's like कोई आत्मा आ जाती है या क्या. नहीं, टीचर की प्रोफेशन में जनरली वो मेंटेन करना पड़ता है कि you have to be strict with students, otherwise they'll take you lightly. But ठीक है. Exactly. मुझे वो just the way I gonna act with children, right? वो बच्चे होते हैं उनको 2 बार ही समझाओ, तीसरी बार नहीं समझते हैं. तो I don't know बाकी लोग क्या करते हैं, हर्षा क्या करती है, वो तो प्यार से समझाती है. What I do is take them in my room, lock the room, and then so, I don't know, it's just that मैं ऐसे करती हूँ. मेरे को पता नहीं क्यों मैं ऐसे करती हूँ. I'm really harsh sometimes, but that works. Yeah, that works, right? Since last 1 year you are teaching, no? Almost 1 year. Yeah, almost 1 year. This is your like professional life, and like talking about your personal life. So guys, if you are following her page, just start following her on Instagram and see the transformation she has done. I mean, मैं वो देखती हूँ, मतलब किस एंगल से देखूँ, you are rotating your body in every angle. मतलब एक अभी कोलाज में आगे पोस्ट करा था. We generally look up to celebrities and like film stars को मैं से देखती हूँ. Like when I'm looking at you because I know you, तो kind of relate हो जाता है कि हाँ ठीक है यार, एक confidence भी मिलता है कि यार I know her and she can do then anyone can do. So my question is, when did you had this thought in mind कि यार fit रहना है? Like was it your like parents thing कि बचपन से ये सिखाया है कि हाँ fit रहना है, या it came on one single day कि हाँ ठीक है आज से start करते हैं? या बचपन से तो क्या किसी को ही नहीं सिखाते हैं. I don't think बचपन से तो एक ही सिखाते पढ़ना है. That's all they teach you, right?
I don't think so. Like the whole thing started in 2015. I think last few months of 2015. मेरा क्या था ना, all this while you also know 12 years of school and then 4 years of undergrad studies, and then finally 2015 when I was doing my internship. During that time I don't know, last few months में I started brisk walking क्योंकि मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था शाम शाम को. वरना क्या होता था कि स्कूल से आओ, घर से स्कूल, स्कूल से घर, and then even if you don't study you still got to pretend to study, right? So I was doing that for 12 years. फिर उसके बाद college you had to do it, right? So I was doing it. I hardly, like, this was always sidelined कि कुछ अगर खुद के लिए करना है या खुद का बॉडी को मेंटेन करना है या कुछ भी हेल्थ में कुछ करना है, लाइक हेल्दी खाना है, उसके लिए भी यू गॉट टू फर्स्ट थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है उस पर. तो वो सब हमेशा सेकेंडरी हो जाता था. सेकेंडरी क्या, आई थिंक आई वुड जस्ट कॉल इट लास्ट. आई लुक एट इट इन द एंड. सो दैट्स हाउ इट. ठीक है, बाद में दिखेंगे, अब तो चल रहा है, चलने दो, वाला होता है. एंड वो ब्रिस्क वॉकिंग में ऐसा हुआ कि मैंने ये नहीं सोचा था दैट आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन. I just thought I'm really inactive, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो let's start walking. And मैंने brisk walking start किया, वो भी ऐसे हाथ पूरा ऐसे मार्च कर करके. I know मैं ट्रैक पे जाती थी, जो भी घर के पास में जो गार्डन है उसमें, so everybody used to see ये ऐसे ऐसे क्यों चल रही है. That in 3 months I lost 8 kgs and that's when I thought अच्छा ऐसे हो सकता है. Like I wasn't looking for इतना massive result, right? And I lost 8 kgs and that's when I thought, yeah, this is working for me. And then I thought कि मैं क्या गलत खा रही हूँ. And then that's where I started the diet and everything. Hi Mehak join. Hey Mehak, मुझे महक से बात किए कितना टाइम हो गया. हाँ. So you started this in 2015, I think, no? Yes. 5 साल हो गए करते करते. 5 साल हो गए. अभी मैं उसको शुरू में ऐसे लगता था कि रिलैप्स होएगा या वापस छोड़ूंगी, कुछ खाऊंगी, फिर से हो जाएगा. अभी मुझे it's like it makes me happy. इसलिए I'm like I continue doing it. That's why. So how did you, like, what is your lifestyle like? ठीक है, पहले तो ब्रेकफास्ट में कुछ और होता होगा, but what is your breakfast now? And you go to college, तो लंच साथ में पैक करके ले जाते होंगे. So कभी कभी बाहर का खाने को भी मिलता होगा, तो how you avoid that, or you are like चलेगा आज तो खा लेते हैं. ठीक है, लाइफस्टाइल क्या है, सुबह मॉर्निंग रूटीन if you can share with us. I know you are a morning person, we spoke, but then कितना जल्दी वाला morning person, I want it. You should tell this to everyone. Morning मतलब कितना जल्दी. Actually, I think. Am I audible? Yeah, it's audible. I think we lost the connection in between, but now it's fine. Yeah, I think I was reconnecting. Abhi I'm back, okay? I hope I'm audible. Actually, I was always a morning person. मुझे पता नहीं था that I am a morning person. क्योंकि back in school ना मैं जल्दी सोती थी. मैं 9:30 सो जाती थी. Out of like it was an escape from the studies. You know, the best escape from studies is कि सो जाओ. तो मैं पूरे 12 साल ऐसे करती थी that you know चलो कुछ नहीं हो रहा. I can't deal with it. For like nights were always like पढ़ना है. So it's better तुम सो ही जाओ. So for 12 years I didn't realize कि I'm a morning person. क्योंकि क्या होता था, रात को जल्दी सो गई, सुबह स्कूल जाना है तो obviously जल्दी उठना है. But there was no excitement. सुबह स्कूल जाना है तो हम क्यों उठे, नहीं उठना. But I used to wake up like nicely, पर उठ के स्कूल ही जाना है. You don't have to look at like the nice sky. You don't have to go for walks, right? So it was always school. But then अभी मुझे लगता है I've always been a morning person. मैं 5 बजे उठ जाती हूँ रोज. Like 4 बजे भी उठी हुई हूँ मैं, ऐसी बात. और 5 बजे कंफर्टेबली उठ जाती हूँ. तो इट्स लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुबह उठना. अगर मैं किसी दिन लेट उठती हूँ, संडेज को अगर 7-7:30 बजे उठती हूँ, तो मुझे आई डोंट नो, आई गेट एंग्शियस. मुझे गुस्सा आता है कि मैं लेट क्यों उठी. मेरे मम्मी पापा बाहर बैठ के सुन रहे होंगे and they'll be like कुछ सीखो. So it's like I mean I'm so sorry about the cooker का whistle. Okay. नहीं ठीक है यार, ये अच्छी आदत हमें पता है, बट हम फॉलो नहीं कर पाते. पीपल लाइक अस, लेकिन पता है जल्दी उठने के फायदे क्या है. बट आई एम ट्राइंग ग्रेजुअली.
बट ये लॉकडाउन वाले ड्यूरेशन में तो लेट सोना जल्दी उठना पूरा शेड्यूल बिगड़ गया है, बट यू आर मेंटेनिंग दिस ड्यूरिंग दीज लॉकडाउन टाइम्स ऑल्सो, तो दिस इज लाइक ग्रेट। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी लेट उठ लो 8-9 बज गए, ठीक है आज संडे है तक उठ गए? नहीं, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती। आई एम सो सॉरी अबाउट द कुकर विसल। So नहीं नहीं I actually what I do is Shraddha ki I try to take care of the front end of my day, and the rest of the day falls into place. Like मुझे बाकी के दिन का फिर ध्यान नहीं रखना पड़ता, वो अपने आप ही it settles. So if like I'm waking up early, तो मुझे जल्दी उठती हूँ, तो वर्कआउट का तू पूछ रही है, तो वर्कआउट भी अगर मैं मॉर्निंग में करती हूँ ना 8-9 से पहले, मम्मा क्या बना रहे हो, इट वाज ऑलरेडी स्टार्टेड। वही बात तो इसी तो खिचड़ी में लगते हैं यार इतनी वजह। ओके सॉरी। तो मैं क्या बोल रही थी, तो क्या कह रही थी, हाँ तो ना अगर मैं 8-9 AM से पहले वर्कआउट कर लेती हूँ ना, तो मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि उससे पहले मेरा माइंड चल ही नहीं रहा होता है। लाइक उसको फंक्शन में लाने में ही 10 बजे के बाद कौन वर्कआउट करेगा, तो लेजी फील होता है, राइट। सो आई ट्राई एंड वर्कआउट बिफोर 7-8, not after 9, नहीं तो फिर एकदम lethargic हो जाता है। Even if you are staying at home the entire day, then also you prefer to do workout before 8 AM. Yeah, what was happening was lockdown के time पे जिम विम सब बंद था। मैं जिम तो सिर्फ जुम्बा के लिए जाती थी, कि मुझे वो डैम डांस आता भी नहीं है, तो मुझे लगा कि कम से कम अच्छी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। So I didn't want to leave that. So I started working out in the evening, क्योंकि मॉर्निंग का थोड़ा सी मेड आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, all that. So I started working out in the evening, बहुत मन मार के। So evenings are always like the second choice. वरना morning workout 7-8 बजे कर लिया, तो बॉडी को पता भी नहीं चलता, अच्छा हो भी गया। Now you can eat whatever you want. Now you can start your day. Otherwise evening में आपको एक अलग टाइम बनाना पड़ेगा। थोड़ा ज्यादा खा लिया, अगर 3 घंटे का ब्रेक ले लिया, तो भी I feel really heavy, और इतना मुझे सुस्ती आता है शाम को वर्कआउट करने में, तो मैं मॉर्निंग ही करती हूँ। उसके बाद फिर मुझे लगती है भयंकर भूख। इट्स लाइक मेरे को मॉर्निंग्स में ना उठने के बाद 2 घंटे के बाद आई हैव टू ईट। इट्स लाइक मैं बहुत क्रैंकी हो जाती हूँ, जो भी दिखता है लाइक भूख लग रही है। So I eat, and like if I'm waking up at 5, then मेरा breakfast तो 9 बजे से पहले आराम से हो जाता है। और तू क्या पूछ रही है अबाउट मतलब ब्रेकफास्ट में मैं क्या, am I audible? Yeah, you're audible. Continue. Yeah. I was reading this comment, the muscular wisdom. He's my brother, so he's telling till the time world wakes up, we are done with our work. Oh my God, high five on that. Actually, that's true. We're done with our work. This makes me happy, right? अगर workout नहीं किया किसी दिन ना, if I'm not working out and I'm just stalling it till evening, तो फिर इट्स लाइक करना है वो वाली चीज हमेशा बॉदर करती रहेगी। तो इसमें सुबह ही करो, खत्म करो, स्टार्ट योर डे। So then yeah, heavy I eat something heavy, मतलब not parathas तो खाए हुए मुझे बरसों हो गए। like I eat parathas, I can eat not aloo, onion parathas मैं खा सकती हूँ, and all the other stuffings with less oil and all, but आलू चावल खाए हुए तो मुझे 5 साल हो गए। like no, I've not even had, क्योंकि पता है I'm not missing आलू and चावल, it's not like कि मैंने कुछ अपने आप को abandon कर रखा है, but what I really love, what the culprit in my diet is sugar. It's like my diet has always been good, I would say, from the very beginning. Like I wasn't like that fat a kid ki jo zyada khata hai, khana zyada khata hai. No, khana was always limited. It was always the other things, right? जो भी चीज शुगर से बनी है ना, चाहे कितनी भी खराब हो, बीट पार्ले चीज मैं वो भी खाऊंगी। It was always like that. तो मैं कच्चा हमेशा से खाती थी, like बेकरी हो गया, शुगर से जो भी बनता है I will eat it, no matter but then I started evaluating why do I like sugar so much, and when will this urge stop कि अब नहीं खाना है, मैंने बहुत खा लिया sugar. It never stopped actually. अगर तू मेरे सामने कुछ cookies रखेगी, I'll eat and I feel अब तो रुक जाओ, मेरे को satiety नहीं होता। मेरे को होता ना कि okay, you're done with sugar, now stop eating sugar. That doesn't happen with me. So the only thing that works for me is absolute abandonment. अगर मैं absolutely abandon कर देती हूँ sugar को ना, like sugar detox कर लिया, तो मेरे mind में रहता है कि नहीं खाना है, क्योंकि I'm that kind of a person, like होता ना वो
सांड टाइप के जो समझते ही नहीं है कि नहीं खाना है तो नहीं ही खाना है। तो थोड़ा खाया, किसी दिन मैंने शुगर थोड़ा खा लिया, तो हम लाइक अरे आज तो खा ही लिया, अब और खा लेते हैं। सो लाइक नो कंट्रोल, शुगर का कंट्रोल नहीं है। बाकी आई थिंक हेल्दी लोग हेल्दी तो बहुत ज्यादा, लाइक एवरीबडी इज ईटिंग हेल्दी। आई थिंक देयर इज अ होल लॉट ऑफ हेल्दी फूड अवेलेबल आउट देयर, नॉट द पैकेज। ब्रेकफास्ट क्या होता है? व्हाट यू जनरली ईट इन योर ब्रेकफास्ट? लाइक व्हेन यू गो टू कॉलेज तो हेवी ब्रेकफास्ट करके जाना है, तो व्हाट यू जनरली प्रेफर? देख, अभी आई एम वर्किंग इन द मॉर्निंग, आई एम वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग, तो मेरे को सबसे इजी जो लगता है ना, जो वर्कआउट के जस्ट बाद मैं खा सकती हूँ, वो मैं बनाना सुबह बहुत ट्राई करती हूँ। रोज एक बनाना तो खाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, बनाना, कॉफी, पीनट बटर और थोड़े से नट्स, इनकी स्मूदी बना लेती हूँ। बनाना, कॉफी, पीनट बटर, जो पीनट बटर जो अनस्वीटेंड होता है, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, लाइक कोई सा भी उठा सकते हैं अपन, अनस्वीटेंड हो, और जो ट्रांस फैट में नहीं, जिसमें ट्रांस फैट कम हो, वो वाला उठा लो। उसको मैं मिक्स करती हूँ एंड थोड़ा सा लाइक 200 ml और 150 ml का मिल्क डाल देती हूँ, एंड देन आई जस्ट मेक अ स्मूदी आउट ऑफ इट। दैट स्मूदी इज सो गुड, राइट? इट कीप्स मी सो फुल, लाइक मॉर्निंग के 2 घंटे आई फील अभी का सेट हो गया मेरा माहौल। सो देन उसके बाद क्या हमारे घर में बनाना से याद है, बनाना शेक इज लाइक हमारे, मैंने पूरे लॉकडाउन में सुबह विश्वास के लिए, मेरे भाई के लिए बनाना शेक बन रहा है, तो पूरे घर वालों को वो ही पीना है। तो आई एम सो यूज्ड टू इट। मैं इतना ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ बनाना शेक, लेकिन फिर भी बनता है, बिकॉज आई थिंक देयर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ हैविंग बनाना शेक एंड स्मूदी जो तुम बोल रहे हो। इट्स लाइक कि आई हैव सीन इन माय फैमिली, मुझे मतलब इतना वो हो गया है कि अब नहीं यार, अब नहीं हो रहा, क्योंकि वो टेस्ट इतना ज्यादा इम्बाइब हो गया अंदर कि अब नहीं, बनाना शेक नहीं पीना। सो ही इज टेलिंग अबाउट दैट। तुझे बनाना नहीं पसंद? नहीं, मुझे पसंद है, बट इतना ज्यादा हो जाता है रोज रोज बनाना शेक, रोज तो पिएंगे ना, थोड़ी सी भी मसल सोरनेस होगी तो इट रियली हेल्प्स। एंड सबसे इजी होता है, पता है, बिफोर ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट विद स्मूदीज। स्पिनच रोज ला रही थी एंड बहुत सारे बीटरूट। अभी क्या, आई एम बैक टू वर्कआउट, आई मीन वर्किंग आउटडोर्स, तो अब जल्दी जल्दी सब करना होता है, तो जल्दी जल्दी में सेंसेस, माइंडफुल ईटिंग भी करना है, and you still got to eat also, eat right also, so a lot of things are there. तो मैंने अपने शॉर्टकट्स बना लिए जो मुझे मोटा नहीं करेंगे, जो मुझे गिल्टी फील नहीं कराएंगे। मोटे नहीं करेंगे इज नॉट द राइट टर्म, जो गिल्टी फील नहीं कराएंगे। I don't know, I do feel guilty when I'm like eating like 10 cookies out of a packet, one after the other. उस टाइम तो लगता है oh these are good, but then there's no full stop, like the खाते जाओ, that's when guilty तो feel होता है but control feel नहीं होता। So मैंने शॉर्टकट्स बना लिए अपने मील्स के कि चलो बनाना स्मूदी पी लेते हैं। दिन में आई ईट लाइक अ प्रॉपर लंच। दिन में भी मुझे जल्दी भूख लग जाती है। एट 1 PM 1:30 PM आई हैव टू ईट। इफ आई एम नॉट ईटिंग, मैं फिर आई फील क्रैंकी, आई फील लाइक जो दिख रहा है उस पर गुस्सा मारो। तो इसलिए एट 1:30 You carry your dabba with you lunch में proper खाना? I carry a proper, not one dabba, I'm like a huge small इतने सारे, like I've got a pink color tiffin, I know, don't judge me, but pink color tiffin, so there's like so many dabbas in it, so मैं बहुत अच्छे से lunch ले जाती हूँ। Like I have always had 2 chapatis in lunch since beginning. Okay. Like थोड़ा मम्मा छोड़ती नहीं बिना घी के, वो बोलो नहीं तब भी लगा देती है। कभी मैं बना रही होती हूँ, I don't like sprinkle or like brush ghee on it. I try not to, but then she's like, he is good for the bones and the whole lot. But I've seen people, they don't have chapatis also. Like जो gym वाले होते हैं ना, वो rice, chapati and potatoes. So what do you say? मतलब I think rice नहीं खाना चाहिए, sugar नहीं, लेकिन chapatis are like sometimes I think we should have proper lunch. लेकिन जो लोग chapatis भी नहीं खाते हैं wheat वाला, तो वो भी, what do you say? Exactly, but I think Shraddha, this is a very personal like say everybody has their own, like what works for me might not work for others. तो मेरे को ऐसा लगता है leaving aloo and चावल, I was a crazy fan of दाल चावल back in school के 12 साल मैंने हर रोज डिनर में दाल चावल खाए ही होंगे, क्योंकि मैं तो अब तो मैं डिनर भी नहीं करती, मुझे भूख ही नहीं लगती रात को। बट मैंने I've had दाल चावल, I was a crazy fan of दाल चावल, बट जब when I left चावल ना, तो मेरे को ऐसे लगा नहीं that I'm missing on something major, क्योंकि अगर चावल नहीं है तो रोटी है मेरे पास। और what about brown rice? Yeah, I tried once.
I tried once, but वो पता कैसे प्रोसेस्ड होते हैं, तो उसपे कोटिंग होता है. Once you like wash them off, तो मैं सोच रही तो वही राइस. There's this brand दावत, okay, so I got this brand. थोड़ा मुझे खाने में थोड़ा उसका स्टार्च निकला हुआ था. Like how the Bengalis eat, they like remove the starch. हम लोग क्या कहते हैं, पानी जो चावल का जो पानी होता है उसको निकालते नहीं पकाते टाइम, हम लोग वो पानी रखते हैं. So that is very fattening, राइट. उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है. तो हमको वही चावल अच्छा लगता है, दैट्स टेस्टी, राइट. और वो स्टार्च निकाल के होता है, वो बहुत ड्राई लगता है, उसमें मन करता है चावल खाओ ही मत. सो मेरे को चावल मैंने इतना मिस नहीं किया, आलू भी नहीं किया, जबकि आलू इज लाइक हर चीज में आलू. यू मेक फ्राइज, यू मेक सब्जी, you make seriously potatoes is like हर सब्जी के संग बन जाता है. So हमारे फैमिली मतलब घर में नहीं बनता, आंटी अंकल कोई नहीं खाता potatoes, या like they eat but you don't. Everybody eats aloo. I don't eat aloo. I don't आलू को मैं बिल्कुल मिस नहीं किया, चावल को मिस नहीं किया. These are the only two things जो मैं नहीं खाती हूँ, बिल्कुल ही absolute abandonment. बाकी sugar is like on and off. I'm really good friends with sugar. तो वो छूटती है फिर वापस, it's like alcohol के लिए. So I'm just trying to control it. But वो क्या है ना, अभी my mindset is such that अगर sugar भी नहीं रहेगी तो life में क्या रहेगा. So if you make cakes out of it, मुझे bake करना अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है अगर bake कर रहे हो तो खाओगे तो सही ना कि क्या bake किया है. So sugar अभी चल रहा है. It's like I'm not absolutely enemies with sugar. बाकी मैं lunch proper करती हूँ and fruits खाती हूँ. Lunch के बाद after lunch like evening snacks कुछ या सीधे फिर चाय. When I come back, I really feel hungry. मुझे भूख लगती है. And I've got this really ugly habit of having a cup of tea with my mother, जो कि छूटती नहीं है. Like ऐसा नहीं है कि it's a lot of tea. No, it's not a lot of tea. It's like अदरक and इलायची वाला चाय, which I was like मैं जब छोटी थी कभी चाय वाय हमने पी नहीं. But since I'm staying with my mom, तो वो तो एक बन ही गया है that you go to sit with her and talk to her and कैसे चाय पे चर्चा like that. So I have sometimes I have tea. तो मैं चाय पी लेती हूँ. Coffee, I was a huge fan of coffee when I was studying मैम. तो भाई बिना कॉफी के तो you can't, एक पेज नहीं चेंज होगा बिना कॉफी के. And अगर if I'm studying, I've always been a not and keen studies. तो एक पेज पढ़ रहे, ओ बहुत सारा पढ़ लिया. You go to get up, make a cup of coffee. वो कॉफी बनाने में पहले वो बीट वाली, हमको तो वैसे भी we like the beat वाला कॉफी, right? That should happen way after us growing up. So वो बीट करते करते 15 मिनट वेस्ट करना, वो दूध गरम करना, that was like a coffee thing was a real thing. Now the coffee I've cut down on coffee. बहुत ही कम कर दिया coffee. Like occasionally गरम coffee तो वैसे भी वो बीट करके अच्छी लगती है. We don't even like it in summers. So cold coffee I try to avoid, क्योंकि cold coffee मुझे लगता है बहुत calories होंगी, ठंडा भी होता है. There's already इतना गंदा season है. So I don't want to be sick. तो मैं ठंडा वंडा तो नहीं, अवॉइड ही करती हूँ बिल्कुल. तो कोल्ड कॉफी हार्डली आई हैव इट. बाकी शाम में आके आई हैव फ्रूट्स. मेरे को वाटरमेलन बहुत ही पसंद है, दो उसमें भी शुगर ज्यादा है, बट नॉट दैट आई एम अ डायबिटिक. दैट इज नेचुरल शुगर, सो वी कैन हैव दैट. आई हैव अ लॉट ऑफ वाटरमेलन. लाइक अभी लास्ट 2 महीने में मैंने जितने वाटरमेलन्स खाए होंगे ना, मेरे को लगता है किसी का परिवार मिलके उतना नहीं खाता होगा. Seriously, I mean, हर चीज में watermelon, and I eat the seeds also, like not taking out the seeds directly. So watermelon available था. और क्या, like जो भी seasonal fruits है ना, वो तो मैं सारे खाती हूँ. फ्रूट सारे खाती हूँ. चीट मील में सब कुछ जो शुगर से बना हुआ होगा वही मेरा चीट मील होता है. कभी रोटी सब्जी या चावल आलू. I think we lost the connection. I think there's some network issue. Am I audible? Harshita? Am I audible? Am I audible? Yeah. Am I audible to you? Yeah, absolutely. Okay. तो एक्चुअली ट्रीट में मुझे याद आया था, कभी ऐसा मन नहीं करता कि आज किसी की रिसेप्शन में गए, किसी पार्टी में गए, शादी में गए, तो वहाँ पे वी हैव दैट फास्ट फूड एंड जंक फूड एंड
we try to have that also sometimes. Cheat meal. बोल रही हूँ ना कि मेरे को मैं किसी if I'm going out to any party ना मुझे कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करता, nothing lures me कि मैं ये खाऊं या वो खाऊं except anything made of sugar. And there's like a whole bunch of things in sugar यार, इतना मीठा, इतना are you there? Yeah, you're there. मीठा खाने में बहुत सारा सामान होता है, like तुम अपना स्टार्टर्स को डिच कर सकते हो, मेन कोर्स को डिच कर सकते हो. मैं कभी मेरा दिमाग खराब होता है एंड आई एम आउट, मुझे खाना होता है किसी भी फंक्शन या किसी में भी, तो मैं दबा के खाती हूँ तब मीठा मीठा मीठा, तो बस और कुछ नहीं खाऊंगी. आई एम not like pizza burgers and noodles and all that. पता नहीं, बर्गर तो आई नेवर लाइक, मतलब नेवर लाइक एज इन मैंने खाए हैं, but मुझे the whole thing was like everything dripping out of your mouth. The whole was like it was a dirty kind of eating. तो मुझे वो ऐसा लगता था नहीं, I'm just gonna spoil everything. I'm not gonna have burgers. Pizza I like. Pizza I really like Domino's का, but वो मैं occasionally खा लेती हूँ. Like not a What about in dinner? Dinner में क्या चलता है? Dinner या मैं सुबह से ही इतना खाती हूँ जब मैं when I was home or when I actually have a lot of time to think about health and workouts, तब मैं बहुत ध्यान रखती हूँ. Then I take 6 meals a day, छोटे. Like in 1 hour I'm gonna eat, after 1 hour I'm gonna छोटा meal. तो अभी I'm back to working outdoors, तो इतना ज़्यादा 6 meals नहीं हो पा रहे. But then also I try, मतलब रात को I don't know, I sleep early, right? I sleep by 9:30, 10. Latest by 10:30. 10:30 के बाद I'm just gone. So पता नहीं, एक आदत बन गया है since 5 years ना कि you sleep at 10:30 सो जाते हो. अरे खत्म एकदम, like 10:30 मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ. If I'm waking up at 5 or sometime before that, 9 तक तो like खत्म, एनर्जी खत्म हो जाती है एकदम. तो फिर मेरे को चाहिए कि before 9 जब मैं सो रही हूँ, my stomach should be absolutely light. मेरे को नींद ही नहीं आती है. If I've eaten, sometimes my mother forces me कि नहीं, you go to eat with me, and then I eat मन रखने के लिए, दिल रखने के लिए. उसके बाद I deeply regret. नींद नहीं आती, I feel so heavy. तो dinner तो बिल्कुल ही नहीं होता. फिर बीच में dinner से पहले, जैसे अगर मैं शाम को workout करी तो मैं smoothie बना लूंगी, बनानास खा लूंगी. इतने नहीं खाती हूँ क्योंकि बनानास थोड़ा वेट गेन भी कराते हैं. इतने नहीं, जैसे जिस दिन ज्यादा जुम्बा भी किया है, एक्स्ट्रा योगा किया, वर्कआउट किया, कुछ किया, तो मैं 2 बनानास की स्मूदी बना लूंगी, शाम को एक और खा लूंगी, फ्रूट्स खा लूंगी. So yeah, that's Okay, so what is that one motivation which keeps you going कि संडेज को भी वर्कआउट करना? ऐसा एक दिन ऐसा नहीं जाता कि यार आज छोड़ दो, आज थकी हूँ मैं, आज सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, या उठ भी गए तो ठीक है, आज प्रॉपर वर्कआउट नहीं, एक सूर्य नमस्कार कर लिया चलेगा? मतलब एक ऐसा मन करता है कि आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आज रात को थोड़ा सा लेट हो गया, आज संडे है, यू आर नॉट फीलिंग लाइक डूइंग एनीथिंग, सो समटाइम्स यू फील इट और लाइक करना है. नहीं, ये करना है वाला तो वैसा एंथुसियाज्म जो आई डोंट थिंक किसी में भी होता होगा. आई थिंक शुरू से ही आई हैव ऑलवेज like this is what I felt कि when I'm working out I hate it, like mostly people hate it, like अब क्यों करना है. But when I see results, like जब results देखने मिलते हैं या खुद को we observe, we feel like oh I've lost it, oh I'm doing this, oh I've learned this. Like it's not even about losing anymore. It's not about losing. It's hardly about maintaining. Maintain तो हो ही जाता है. If you're working out, if you're eating like थोड़ा सा sensible, थोड़ा सा, not even majorly sensible. नहीं, हम like हमें तो कुछ खाती ही नहीं है, हमारी लड़की तो कुछ खाती ही नहीं है. People do that, right? Like or even लड़के are no less, right? So नहीं, वो नहीं है. But when I see results, no, so that's what keeps me motivated कि नहीं, करना ही करना है. And दूसरी चीज, 3 चीजें हैं. दूसरी चीज that I work out in the morning, right? तो workout, when I'm working out in the morning, all my absolute high energy goes to the workout rather than going anywhere else. तो जो एकदम नींद खुल के जो इतनी fresh feeling होती है, वो everything goes to the workout. So I give my best on that. Thirdly, since अभी क्या हो रहा है, अभी recently for the last few months, I've been learning थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा हाथ योगा, headstand. But बड़ा सा काफी कुछ you are doing it brilliantly. But I have seen your pictures and videos. मतलब firstly पहले मुझे सुनने को, मतलब देखने को मिलता था कि ठीक है, you are sharing pictures of what you had in breakfast.
but the way you turn around your body and जितने भी आसन थे वो, like I don't know the names of those asans, but वो since when you have started doing yoga? कब से करा है start? Frankly, Shraddha, I don't know yoga. I do not know yoga. My mother does yoga every day and she's been doing for a couple of years now. पापा भी करते हैं, but वो जो होता है ना वो वाला strength वाला योगा, हाथ योगा जिसको बोलते हैं, जिसमें head stand आता है, hand stand आता है, चक्रासन आता है, lot of things. वो चीज I didn't know at all. मेरे को नहीं पता था. योगा मुझे अभी भी नहीं आता. अभी recently, like for past 1 month, we started doing like I have a group of people. I mean, group of ladies. I'm doing this Surya Namaskar with. We do it every morning. Surya Namaskar is also an introduction to my life, which is working out well because it's like क्या होता है वर्कआउट के बाद स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट शुरू में स्ट्रेच करना है. तो अगर आप सूर्य नमस्कार अच्छे से कर रहे हो तो उसमें ही आपकी इतनी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है दैट यू डोंट फील लाइक ओह मेरे को दोबारा स्ट्रेचिंग भी करना है. तो सूर्य नमस्कार इज न्यूट्रिशन. बाकी हेड स्टैंड एंड हैंड स्टैंड जो मैं कर रही थी ना, आई स्टार्टेड, आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई डिड वाज इन नवंबर लास्ट ईयर when somebody in the gym was doing, I think it was a trainer, he was doing it and I was like I want to learn this, and then he tried to teach me thoda bahut. तो I did थोड़ा बहुत वॉल की सपोर्ट से और किया 15 दिन बाद उलट के गिर गई, बहुत जोर की शोल्डर पे लगी and I think I cracked a bone or something because I think I should, like, you should always do with proper precautions, which I thought नहीं कुछ नहीं होता है. एक बार इंजरी हो गया तो it doesn't get back to normal. So that's what I learned. So lockdown हुआ and then I was like I've got plenty of time to do this shit on my own at home. Like इस gym में क्या होता है, lot of chaos, lot of people, and if you're not able to learn, then they will teach you once, twice, right? But वो जो every small detail of your step they will not observe, and you're conscious also. So then I took to my balcony and we've got a spacious balcony. तो फिर मैंने सोचा let's make use of it. सारा सामान इधर उधर किया, and my mother still scolded me for the fact that मैंने डोर पे ऐसे पैर मार के बना दिया है और दूसरा जो वॉल है उससे मेरे जूते चमके हैं. So what is your suggestion to people like जो लोग अभी जिम पे डिपेंडेंट थे and they are like giving this excuse कि यार जिम बंद है. My own, like not my real brother but few of my relatives, my cousins, so few of them are telling कि यार जिम बंद है तो क्या करें. So they are not putting that effort to कि घर पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं. So what is your few suggestion, 1 or 2 suggestion if you want कि ठीक है जब तक जिम नहीं ओपन हो रहे हैं तब तक जिम्स ओपन नहीं हो रहे हैं तब तक मतलब जैसे घर पे ही हम खुद को फिट रख सकते हैं. यार ये सब मेरे को लगता है कि एक तो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, समथिंग वर्क फॉर मी एंड सम इट माइट नॉट वर्क फॉर अदर्स. सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं. आई लव्ड ब्रिस्क वॉकिंग. आई हैव बीन डूइंग, लाइक अभी भी मेरे को कोई बोले जिम में जाओ ब्रिस्क वॉकिंग करो, आई टेक इट. थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 45 मिनट्स में जितना वॉक कर सकते हैं 45 मिनट्स की जिम में उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, वो है क्योंकि आपकी स्पीड पर भी डिपेंड करता है. But what I saw after brisk walking was massive. Like I've never seen that transformation in me before that. So the credit, all that credit goes to brisk walking and not to gym. Gym, though, I mean, I introduced myself to gym last year only, properly. जिसको बोलते हैं ना, that too because of Zumba. Like Zumba is really, high intensity. You know, I zero in dancing, so I thought थोड़ा बहुत moves I'll learn. बाकी I think for people who are giving this excuse कि जिम बंद है तो जो जिम में करते हैं वो घर पे भी कर सकते हैं. जो पावर लिफ्टिंग होती है या जो इक्विपमेंट्स के साथ होता है, आई थिंक ट्रेडमिल इज a very boring thing. Like what you do on treadmill you can very well do it outside. In fact, in not using the AC and in your natural environment you can do it better. So I'm not into running. I hate running. फिर भी मैं ट्रेडमिल तो वैसे भी नहीं करती थी. बट पीपल were excusing themselves, not anybody but themselves, कि नहीं बाद में करेंगे. What they're actually doing is gaining more kgs or कुछ. Right, I have seen my cousin भैया, he has gained weight, he has become fat in last 3-4 months. I'm like teasing him कि जिम जाओगे तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी, घर पे कुछ स्टार्ट कर लो एटलीस्ट. करना ही पड़ेगा ना. ये नहीं घर में आराम से कर सकते हैं यार. आई थिंक बहुत सारी एप्स भी थी लॉकडाउन के टाइम, कल्ट फिट, और ये लोग रोज करा रहे थे. मतलब स्कोर, दे वर गिविंग स्कोर्स एज वेल, लाइक
जितना अच्छा तुम वर्कआउट करोगे उसके अकॉर्डिंग तुमको ग्रेड्स मिलेंगे. क्लास रैंक भी आती है, we get ranks in class also. सब कुछ अवेलेबल So है. this is like for the youth and for the youngsters. But what about the children who are studying? They're having their online classes and back to back coaching online. सब laptop computer के सामने बैठे हैं, and then they are not allowed to like play outside. तो स्टूडेंट की मतलब जो स्कूल चिल्ड्रन है उनके लिए कुछ ऐसे सजेशन है कि ठीक है मॉर्निंग उनके 8 बजे से क्लास स्टार्ट होता है. आई सी माई सिस्टर, my brother wakes her up early in the morning और वो थोड़ा अपने एक्सरसाइज कराता है उसको. But what about the children like जो वेट गेन कर लेते हैं, घर पे खा रहे हैं खूब, उनकी मम्मियाँ उनको हेवी ब्रेकफास्ट दे रही हैं, लंच में कहीं मूवमेंट हो नहीं रहा है, कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं. What is your suggestion and what are your thoughts on this? I think ये जो children की तू बात कर रही है, these children were actually us back in the day. Everybody, this is basically us back in the day. 12 साल हमने यही किया है और कुछ नहीं किया. Because what actually was our purpose that time in life was पढ़ो, school जाओ, पढ़ो, homework करो, पढ़ो, right? Whatever, everything boils down to पढ़ो. Okay, everything was secondary. So I think वो 12 साल जो होते हैं when जब आपको ये नहीं मिलता है, डिसीजन मेकिंग नहीं मिलती है. डिसीजन मेकिंग इज अ सेकेंडरी थिंग. पहले ये तो बताओ व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट टू बी ईटन, क्या सही है, हेल्दी है खाने का, क्या नहीं. So the basic role goes down to the family, to the person who handles the kitchen. And I mean we have been taken care well of, right? Because हम लोग के parents considerably healthy ही खाते हैं, ठीक है, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते थे. Now this is your personal choice कि तुम उसमें से pick करो क्या खाना है. But other people who are giving whatever shit from the very beginning, बचपन से उसको क्या नहीं खिला रहे, like होता है ना, like highly pampered kids, like a lot of people you see, right? बचपन में they're like they eat, Shraddha, they eat like there's no tomorrow. They eat like that. कल तो आएगी ही नहीं, हम बड़े तो होंगे ही नहीं, हम बड़े होंगे तो मोटे ही नहीं होंगे. It's like there's plenty of life, you go to live 100 more years, right? So ऐसे खिलाते हैं, ऐसे, and उनके पेरेंट्स उनको खिलाते हैं, पैम्पर करते हैं इस तरह से, चिप्स खिला रहे हैं. उस टाइम के लिए ठीक है, but the guy or the kid does not understand that you are supposed to have this in moderation, and this becomes a habit. 12 years and plus the one thing that never changes is पढ़ो. Right, so this kid now is बाद में वही पेरेंट्स आगे बोल देते हैं कि बहुत मोटे हो गए हो आप, you need to reduce weight. That's disgusting. क्योंकि अब तो वो बड़ा हो रहा है, 11th में है, 12th में है, जो भी है, उसके पास ऑलरेडी इतना प्रेशर है. तुम मुझसे बोलो, yeah, indirectly you're asking for good results, right? Are you talking about children? So I'm telling you the whole scenario जो हर घर में हो रहा है, because now you want he or she should provide you with good results. Good results के साथ कभी भी ये नहीं होता कि मैं सुबह 4 घंटे पढ़ लूँ, शाम को 1 घंटा वॉक कर लूँ, ऐसा कभी नहीं होता. Unless and until you're done with your studies, absolutely. You know, I totally feel this thing जो अंकल आंटी लोग बोलते थे, इतना कर लो उसके बाद लाइफ ही लाइफ है, इतना कर लो उसके बाद लाइफ ही लाइफ है. What they actually were trying to say is इतना कर लो उसके बाद बॉडी का ध्यान रखना, इतना कर लो उसके बाद you can actually take care of your health and everything. That was the whole context behind it. So I think in 12th standard, if the student is supposed to study or he's supposed to monitor what he's eating or not, and now he weighs 100 kg, and now you're like, no, you will not get to eat this, you will not. Now imagine the kind of stress he's dealing with. एक तो उसे पढ़ना है, he has to get good grades. उल्टा तुम उसको बोल रहे हो, you're, you know, firing him, you know, gun point पे बोल रहे हो, मत खा. जब वो बचपन से वो खा रहा है तो कैसे नहीं खाएगा obviously. So I think इसके अंदर सबसे important चीज है self realization. Unless and until he or she feels कि नहीं यार, I'm gonna work out for myself, मुझे लगता है I can do it, I'm gonna do it. कितना भी बोलो वो चिढ़ेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा. So I think parents should the best thing that they can do is जब start करो ना खाना, introduce करो उसकी life में, तो इतना अच्छे से करो. Like if you're eating healthy, your kids will automatically eat healthy. ऐसा नहीं होगा that they turn 100 kg and now, you know, everybody's stressing about that. So I think that's what they should do. So I just want to relate our conversation to mental health also, because personally I feel and I believe that if a person is physically fit, then he is happier than the other person who is not physically fit.
because mental health and physical health are two both interrelated. This is what I feel and I believe, because we have seen in the lockdown also, जो ज़्यादा workout करता है या ज़्यादा physically healthy खाता है, healthy रहता है, so he is like happier. So what are your thoughts in this? Like, do you believe this, and have you seen this in your personal experience? If you can tell us with your personal experience, क्या ठीक है? Well, I think वैसे happiness is a very, pretty subjective concept. सबका अपना अपना वो होता है. But if we talk about people who are physically active, I think they can combat stress, anxiety, depression way better than the other people. Like that's what they say. If you're working 30 minutes also every day, like medium intensity, high intensity कर रहे हो तो बात ही अलग है. You're in a different genre. But अगर 30 minutes of high intensity workout you're doing every day, I think that's what the body, the brain releases these endorphins, which are known as the happy hormones, and it absolutely shows up on your face. दिखता है कि oh fuck मैंने इतना अच्छा किया है. So I think वो जो एक टाइम होता है ना when घर से निकल के वर्कआउट करने जाना होता है या घर से निकल के बालकनी पे वर्कआउट करना होता है, वो सबसे dwindling होता है. You want to go, you don't want to go, you want to go, and then you just have to go. That moment you have to decide, okay, I'm gonna go, because उसके बाद 30 minutes के बाद या जितने भी टाइम का आप वर्कआउट करें, उसके बाद the kind of happiness that you feel, that's I cannot describe that. So I think it's absolutely linked. दोनों चीज बहुत linked है. It's what अगर mentally, if you're feeling thoda सा भी, like in your last session you had a discussion on that already. Right? I think we all get a moment जब we feel like नहीं यार, I don't feel really happy today, I don't know what the reason is, and then even if there is the slightest small thing that happened in your life, if you're depressed, every other 20 things gonna pile up and accumulate in your head, and you'll be like ये भी गलत था, वो भी गलत था, oh ये तो life ही खराब है, everything's wrong. So at that moment you've got to snap your thought, and by snapping your thoughts, you can do one thing. You can go out walk, you can work out. Yeah, so this is what I do actually. मुझे कुछ मन नहीं कर रहा होता है करने का, I keep my phone aside and I just go on my terrace or maybe in गार्डन है मेरे घर के बाहर, मैं उसमें वॉक करने लग जाती हूँ. So I think if we walk even for 15-20 minutes भी ना, तो आपके थॉट्स एक बार थोड़े से काम हो जाते हैं, थोड़े सेटल डाउन हो जाते हैं, then you are back, you are geared up again. So this is like this I do personally. So okay, Harshada, one personal question to you. I don't know, so if you feel comfortable you can answer that. So like I see you are looking so gorgeous in these short hairs, and in school days you were not. I think you had still till shoulder in school days. Yeah. You used to make me, I think. Longer than. So like when you decide this that okay, I want my hair short. I think your mom has short hairs, but then your twin sister Harsha, she has longer hair. But then how you took this decision? Because this is generally in India and our society, लड़कियों को बड़े बाल चाहिए होते हैं, and like hairstyles अच्छे से बन सकती हैं, and then but then you stand out from all those girls and you look gorgeous and beautiful in these short hairs. Like when this thought came in mind कि ठीक है आज बाल कटवाने हैं, आज मुझे छोटे बाल रखने हैं, and then उसके बाद भी लोग बोलते होंगे relatives कि यार क्या कर लिया, क्योंकि generally लोगों का conception ही होता है कि हाँ लड़कियों को बाल बनाने. But what are your personal thoughts and how do you deal with those people who are like talking all this nonsense? Okay. Okay, it's funny, but it was just a random thought. My mom, she has a pixie hair and she's been having it for almost all her married life. She had really long hair. So I was with her, she was getting her hair chopped by regular trimming, okay? And then I had long hair back in 2014, I think, yes, 14 December. And I was plump. I had like chubby cheeks and I was fat. So, I mean, उस time पे it was a very, like, I didn't think it through कि छोटे बाल on a fat face, not happening, right? But I still like, I was like, मेरे भी काटो आप. The guy who cuts my mom's hair, I think मेरे भी इतने छोटे काटो. I was a lot of hair. They took it for making the wig and whatever. तो मैंने कटा ली and then I did look really chubby but the hair was nice. I really like the low maintenance hair. तो उसके बाद I like
experimented with it. I'm trying to grow it back to shoulder. But one thing that I always go back again to Pixie is like fully low maintenance. Workout karo, sweat karo, shampoo karo, get back to whatever. Like you don't even have to. I've like the last time I think I bought a comb was in 2014 only. उसके बाद ही नहीं खरीदी है. It's it's that easy. बाकी a lot of people keep telling me. Mostly men, friends, relatives. I don't know. There's a thing with men like long hair, which I don't give a shit about. But okay, what's happening? It looks nice on your face. Actually, it suits your personality also. No, a lot of people do compliment. Definitely. I mean, it's not like that. Thank you so much to you also. But this is like low maintenance. Yeah, you don't need like. जनरली हम लोग मतलब मेरे ऐसा होता है कि ठीक है वीक में 2-3 बार शैम्पू करना है बट यू कैन डू इट रेगुलरली लाइक ज्यादा लाइक स्वेट हो जाता है तो समटाइम्स आई आल्सो फील कि यार स्वेटिंग हो रही है हेयर वॉश करना है बट आई थिंक फॉर यू इट्स फार वे इजियर देन you should talk to Harsha. It's a whole lot of tasks in a to-do list. Oh, I have so I mean it's very easy, like low maintenance. And abhi lockdown mein I've been cutting my own hair. Okay. तो पैसे भी बच गए. So like generally what I get to hear from people that for the workout thing, so people who are fat, so they are like somewhat proud of themselves. ठीक I love the way I am. ठीक है. So this is kind of excuse. You love your body, you love yourself. That is fine. But then doing workout is not punishing you. It's like I feel it is adding to your age, your health, and it is making you more healthier than the one. So what do you say to those people कि ठीक है हम मोटे हैं ठीक है चलेगा. लेकिन workout करने के लिए कुछ एक like this is what you told previously कि ठीक है self realization होना चाहिए. But how to get that self realization? Because just one motivation in few lines if you can say कि workout करने की सिर्फ फायदा ही है नुकसान कुछ नहीं है. So why people are not thinking about it? Like बाद में जाके उनको realize होगा. So why don't they take action steps right now? I think जो तू बोल रही है कि I'm fat and I like it. I mean there's a like बहुत सारे there are a lot of thoughts outside. क्या होता है कि people think कि जो मोटे लोग होते हैं they feel inferior and I don't like it क्योंकि जो बाकी लोग जिन्होंने transform किया होता है खुद को by whatever products or by whatever thing that works for them, ठीक है उसको देख के these people are like they don't feel nice and that's when the self realization जब तक वो आएगा नहीं उनको 10 बार ही बोलो 1000 बार ही बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. So and about the fact कि मोटे लोग को वो they're happy, they will be happy obviously. Back in the day in school and after in undergrad I used to eat डब्बे भर के Nutella. And I don't regret it. It was like it was a nice phase जब मुझे बहुत अच्छा Nutella लग रहा है मैं खा रही हूँ अभी I eat watermelon, right? So it's all about self-realization and I think तो किसी को कितना भी बोल ले if they don't feel from the inside and when they are gonna feel then that's what you ask. They just have to get just the slightest of result. If they see थोड़ा सा भी transformation like that bit इतना सा they'll get the motivation. Yes, so all you got to do is उसको बस बोलना है कि ये right चीजें हैं खाने के लिए और तेरे को बस इतना सब कुछ करना है या तो walk कर ले any kind of physical activity. That is small steps. एक साथ gym नहीं जाना है कि साल भर की gym की fees दे दी and then they are going to the fees and then they are wasting the money. Start making the routine. पहले routine बनना बहुत जरूरी है. घर में ही रह के आप क्या कर सकते हो रूटीन ही नहीं बनेगा. ठीक है तीन पीपल जिन्होंने जिम की पूरे साल भर की डिस्काउंट में जिम का पूरा मेंबरशिप ले ली एंड देन दे आर नॉट गोइंग आफ्टर 1 or 2 months. ऐसा नहीं होना चाहिए. वैसे भी it's only 30% is exercise, 70% is diet. कुछ नहीं है. What works for me is if I do one and if I'm doing even one, right? If I'm taking care of the diet then I will definitely work in the exercise. एक का भी मैं ध्यान नहीं रखती ना. It works in synchrony for me. बाकी अगर घर में रह के कुछ नहीं करना है अगर जिम नहीं जा पा रहे या वर्कआउट नहीं कर पा रहे तो make sure you're the master in the kitchen. Whatever going down in your body is highly evaluated, scrutinized. Everything that you know. For me, it's always the sugar. What
I eat, if I binge or cheat or whatever, वो sugar ही है. मेरे को मेरा पता है कि वो sugar है और कुछ नहीं है. But for others there are so many things. लोग कितना बाहर जाके कुछ खाते हैं. So I think वो ही है, बस करना स्टार्ट करेंगे लॉकडाउन में तो इट्स गोना वर्क आउट फॉर देम. आई थिंक करके देखने पे ही पता चलेगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसा फील हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं. मोटिवेटेड भी तभी फील होगा अगर इफ वी आर गोना टेल देम कि हाँ ठीक है कल से करना है, तो नो वन विल डू दैट. बट जब तक खुद करके चेक नहीं करोगे कि हाउ यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, तभी आई थिंक घर में कोई किसी की हेल्प कर रहा है ना, इफ दे आर हेल्पिंग समबडी, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, पापा मम्मा, किसी की भी, if you're helping at home, the only thing that you can work is make sure that all 5 members, 6 members, whatever, how many members, they're eating healthy. Everybody. If you all are eating healthy, then it's gonna be a diet पे तो काम हो ही गया. बाकी उसको workout करना. Actually, at your part, you're doing your bit. पूरा 12 साल उसको क्या खिलाओगे और फिर बोलोगे तू तो मोटा हो गया. Now you got to do something about it. Now imagine the type of workout, the kind of transformation she has to do to, you know, and now he's coming out of that zone जिसमें उसने 12 साल पढ़ाई किया है, फिर पढ़ाई किया है. I think on the part of parents, they should make sure that जो भी वो खिला रहे हैं, because they have to make sure उसको 80 साल और रहना है यार. Right. Exactly. Nice, Harshita. Nice talking to you. Mehak is still there. You joined us again. All these, you have some all these comments. Hi, Mehak. Hey, Mehak. ये all these comments ये क्या बाद में दिखते नहीं है क्या? मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है. No, बाद में नहीं दिखेंगे. बाद में दिखते. But people are liking our conversation. Like, guys, I'm lovingly glad to see you guys together. Hey, Mehak. Strongborn Expedition is my patient Siddharth. Hi Siddharth, Dr. Hershey is the best. Okay. Join. एक मिनट अभी cancel मत करना, I'm still reading. Till the time all books are we done with our work. That's your brother, right? Mommy, thank you, Mommy. She's blowing a lot of kisses. Thank you. Muscular wisdom, exactly. If sugar was introduced in the world today, it would have been banned. A band substance, absolutely. I'm so glad my brother is liking our conversation. Otherwise, he generally don't join my live session. But उसके interest की बात हो रही है यहाँ पे तो. Exactly, Arshita, you need to guide me, meet me guys. We actually have to meet. Everything apart. 10 साल हो गए मैंने श्रद्धा से आज बात की है, आज देखा उसको. मेरे को मिले हुए कितना टाइम हो गया. You know, back in the day, in 11th, 12th. Everybody was like batch party करते. Where are these people? अब का कौन कर रही है batch party? They should do it now. We should plan something. Yeah. Exactly. What if we do it in 20 years? Everybody's gonna come up with grey hair. अभी करना चाहिए. High glycemic index, bad for health, spikes insulin, good. Oh, thank you, muscular wisdom. A lot of people joined. A lot of thumbs up. Excellent. My father's written excellent. Thank you, Papa. Okay. Shivanshi is my gym buddy. Amazing. Highly informative. Thanks, Shivanshi. Dipanshu, thank you. Hi, Mehak. Hi, girls. Oh, yeah. We need to meet. We should plan one batch party thing selling, I guess. Okay. This has been amazing. One decade has passed. 10 साल बीत गए. मतलब like we should meet. No wonder I'm telling you over and over again कि 12 साल हम कैसे निकालते हैं. We really have to change the system. कुछ करना पड़ेगा. Seriously. उसके बाद ये जो वो बोलते हैं ना सब लोग कि ये कर लो उसके बाद खत्म है. उसके बाद सिर्फ पढ़ाई खत्म होती है. वो कभी खत्म नहीं होती है. वो कभी खत्म नहीं होता. अभी तक मुझे ये भी सुनने को मिलता है ठीक है अभी ये कर लो बाद में देख लेंगे. लेकिन I think we should start today. जो भी करना है. तूने एक चीज पूछा था about the fact that मेरे को कैसे टाइम निकलता है कि how do I take out time. I really want to say this कि I don't get time. Nobody gets time. किसी को टाइम नहीं मिलता. कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है. कहीं ना कहीं शाम को कहीं कुछ और करने का होता है काम या मॉर्निंग में कुछ और करना होता है. You have to compromise sometime. अगर मॉर्निंग priorities to find I think what is important. If you don't take out time, so you're ready to, compromise on the health. So you have to take out time. Yeah. So nice.
It was I think we amazing. should end this conversation. It was really nice talking to you. I hope ठीक है Sunday at लोगों का सबने conversation से होगी. Monday motivation मिल गया है कि workout करना है. I hope you get motivated. Exactly. We should like frequently often talk about all these stuff, and because people I've seen change in you, so that because I'm not that kind of person. ठीक है workout इतना नहीं हाँ walk कर लेती हूँ workout वगैरह मुझसे नहीं होता है एकदम से mood होता है कुछ करना है ठीक है but I do walk in the evening में मेरा brisk walk ऐसे हो जाता है but लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है मुझमें जितना I've seen your photos and videos and all that. It's like not so I was a chubby fat ass. I'm not. I mean, I was. You're not that. I was, and believe me, मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था that I'm looking for something. It just happened because I. So now that I know the importance of eating right and thoda बहुत of workout, then I don't want to compromise. I want to keep doing it. So yeah. Chalo, we'll end this conversation. I think it's one. Exactly. It was amazing. I think 1 hour. This is the first time I did a live thing on Instagram. Yeah, like you should do frequently. I think you can guide other people and all. Thanks to you. Chalo, thank you, Harshita. Yeah. Thank you, You're Shraddha. welcome. Thank you. Thanks a lot. We'll talk on call. It was a good conversation. I think you made a good cause. Thank you. Chalo, bye. Bye, everyone. Thank you for joining. Stay connected. Bye.